everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we are going to make this beautiful popcorn stitch flower granny square. आज के tutorial में हम ये प्यारा सा granny square बनाएंगे जिसमें बीच में ये popcorn stitch का flower होगा. So let's get started. So for this we have to make a magic circle first. सबसे पहले हम magic circle बनाएंगे and I'm using two colors for this, one for the flower and one for the granny square. You can use single color as well, it's totally up to you. Chain one करके magic circle को secure कर लेंगे and now we have to we have to make 8 single crochet stitches in the magic circle. तो हमको magic circle के अंदर 8 single crochet stitches बनानी है. If you are not comfortable making the magic circle, what you can do is you can just chain 4 or chain 5 and make a slip stitch to the first chain that you made. So it will also create a loop in which you can work accordingly. अगर आपको मैजिक सर्कल बनाना नहीं आता ठीक से या आपको मुश्किल लगता है तो आप चेन 4 करके या चेन 5 बना के पहली चेन से स्लिप स्टिच करके एक लूप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने फ्लावर के लिए वर्क कर सकते हैं. अगर आप मैजिक सर्कल बनाने में कंफर्टेबल हैं तो आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 1 second 1 2 3 4 5 6 7 8 and I made one extra, so I'll just unravel that. So I've made 8 single crochet stitches in the magic circle. I'll go into the first single crochet stitch that I made and I'll make a slip stitch. तो जो पहला single crochet stitch बनाया था उसमें मैं slip stitch कर लूँगी. Now you can just tighten the magic circle or you can just leave it as it is. It doesn't matter. Once the flower is made, it looks so pretty that these things doesn't matter. So now we'll chain 3 and this is the way you have to make every petal. So this is the first petal that we are making. हम ये पहला petal बना रहे हैं और इसी तरीके से हमने बाकी petals बनाने हैं. Chain 3, make 4 double crochet stitches in the same stitch where you did the slip stitch. जहाँ पे हमने slip stitch किया था उसी stitch में 4 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 and 4. तो ये हमने 4 डबल क्रोशे स्टिचेस बना ली. नाउ पुल द लूप अ बिट, थोड़ी सी लूप पुल करके टेक आउट या नीडल, अपनी नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने चेन 3 बनाया था, जो वी मेड द चेन 3, वील गो ऑन टॉप ऑफ द chain 3, we'll go in the top chain, the third chain we'll go in, then we'll pull this loop through the chain here. तो इस loop को इस chain के through हम pull कर लेंगे इस तरीके से. Now chain 1 to secure. This is the popcorn stitch and your petal is ready. Now we'll chain one more. So we have made 2 chains, one to secure the popcorn and one for the chain 1 space. Now we'll go on to the next stitch and we'll do we'll make a popcorn here. यहाँ पे हम एक popcorn बनाएंगे. So we'll do 5 double crochet stitches here and from here onwards next petals, whichever next petals you're making, we have to create 5 double crochet stitches first. तो अब हम जो भी petals बनाएंगे उसके लिए हम 5 डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे. जो फर्स्ट वाली पेटल होगी सिर्फ उसी के लिए हमें पहले चेन 3 करके 4 डबल क्रोशा स्टिचेस बनानी, क्योंकि वो जो चेन 3 होगा वो हमारा पहला डबल क्रोशा स्टिच की तरह एक्ट करेगा. सो देन अगेन पुल द लूप, टेक आउट योर नीडल, गो इनटू द फर्स्ट डबल क्रोशा स्टिच दैट यू मेड एंड पुल दिस लूप थ्रू द फर्स्ट डबल क्रोशा स्टिच. Chain 1 to secure the popcorn and chain 1 more for the chain 1 space. Now make the third petal 5 double crochet stitches. तीसरी petal अब हम बना रहे हैं 5 double crochet stitches बनाएंगे. 3 4 and 5. Then pull the loop, take out your needle, go into the first double crochet stitch that you made and pull this loop through the stitch. Chain 1 to secure the popcorn and chain 1 more for the chain 1 space for the next round. Then again we'll make another petal
in the next stitch. अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने 8 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस किए थे और उसी में हम 8 पेटल्स बनाएंगे. सो वी मेड 8 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस. सो वील हैव 8 petals because we are making one petal in each stitch. And again we made 5 double crochet stitches. We'll go into the first double crochet stitch here and we'll pull the loop through that. Chain 1 to secure the popcorn, chain 1 more for the chain 1 space. And it's very important that you chain 1 after making the popcorn because you have to secure that popcorn. So you have to do a chain 1 to secure the popcorn and 1 more chain for the chain 1 space. So we are having 2 chains here after every petal. So हर petal के बाद हमारे पास 2 chains होंगी क्योंकि एक chain हम करेंगे popcorn stitch को एक ताकि वो खुले ना, उस लिए सिक्योर करने के लिए, और एक हम chain 1 करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए जो हमें chain 1 स्पेस चाहिए उसके लिए. सो ये देखिए फिर से हमने 5 बना लिए. वी मेड 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस. वील पुल दिस लूप थ्रू द स्टिच, chain 1 to secure the popcorn and chain 1 for the chain 1 space. So 1 2 3 4 5. I've made 5. I'll make 3 more and then meet you back here and let you know what to do next. So here I have made 5 double crochet stitches in the last single crochet stitch. So I'm going to make a popcorn out of this. तो मैंने ये last stitch में petal बना रही हूँ popcorn stitch से. Chain 1 to secure the popcorn, chain 1 for the chain 1 space. Now I have 8 petals here, you can see, and you will also be having 8 petals. And now we have to skip this petal and go into the chain space here. So this is our first petal that we made. ये हमारा पहला petal है और इसके बाद ये जो हमने chain किया था, we have to go in the chain space and do a slip stitch. तो यहाँ पे हम slip stitch करके इसे join कर देंगे. Like this. So our flower is ready. So you can just use it as it is. It's pretty, but for the granny square we have one more round and then we have to make the granny square. So ये आप फ्लावर ऐसे भी बना के यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है. बट अभी इसका एक और राउंड होगा और उसके बाद हम इसको ग्रैनी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर राउंड 2. We'll begin with the same space where we did the slip stitch. So we'll chain 3, 1 2 and 3 and we'll make 4 double crochet stitches in the chain space. इसी chain space में हम 4 double crochet stitches बनाएंगे. So this is the way we have to create our first petal always, with the chain 3 and 4 double crochet stitches, and rest all the petals will be of 5 double crochet stitches. Go into the third chain and pull the loop through the chain. तो इसमें से pull कर देंगे. Chain 1 to secure the popcorn and chain 1 more for the chain space. And now we have to create one more popcorn in the same space. इसी same space में हम एक और popcorn create करेंगे. So we'll make 5 double crochet stitches in the same space here, in the same chain space. इसी same space में, chain space में हम 5 double crochet stitches बनाएंगे. 2 3 4 and 5. फिर से इसका पॉपकॉर्न बनाएंगे. विल मेक पॉपकॉर्न, chain 1 to secure the popcorn and chain 1 for the chain 1 space. So ये देखिए एक स्पेस में हमारे पास अब 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस हो गई, 2 पेटल्स हो गई बेसिकली. अब नेक्स्ट चेन स्पेस में हम इसी तरीके से 2 पेटल्स बनाएंगे. सो विल मेक 2 petals in the next chain space as well. I don't want to say it as a chain 1 space because basically we have 2 chains in the middle, one to secure the popcorn and one as a chain space. So I'll just say chain space and you can understand where you have to make the petal. 4 and 5. So we have made 5 double crochet stitches. We'll create a popcorn out of this. Chain 1 to secure the popcorn and chain 1 as a space and one more petal in the same space, the same chain space. We'll make one more because we have to make 2 in each chain space.
तो हमें हर चेन स्पेस में अब 2 पेटल्स क्रिएट करनी है. सो बाय द एंड ऑफ दिस राउंड यू मस्ट हैव 16 पेटल्स. तो इस राउंड के एंड में आपके पास 16 पेटल्स होनी चाहिए, क्योंकि हर चेन स्पेस में आप 2 पेटल्स बनाएंगे. So you have to complete this round in the similar way by creating 2 petals in each chain space. So I'll complete this round and then I'll show you what to do next. तो मैंने हर space में 2 petals बना लिए हैं. I've made 2 petals in each space here and I've made chain 1 to secure the last popcorn and one more chain to make the chain 1 space. And now I'll be going I'll just skip the petal, the first petal, and go into the chain space and make a slip stitch. तो ये जो petal है, first जो petal जो हमने बनाई थी, उसके बाद का जो chain space है उसमें जाके हम इसे slip stitch करके join कर देंगे. So just make a slip stitch and join and chain 1 and fasten off. I'm fastening off here because I'm changing the color. But if you're using single color, then you can just continue from here. अगर आप एक ही कलर यूज़ करेंगे तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं 2 कलर्स के साथ बना रही हूँ और 2 कलर्स के साथ बहुत ही सुंदर लगता है. कॉन्ट्रास्टिंग कलर अगर आप यूज़ करो तो बहुत प्यारा लगता है. लेकिन अगर आप एक कलर यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप एक ही कलर से बना सकते हैं इसे. So you can, and now I'm going to change the yarn, so I'll make a slip stitch. तो yarn change कर रही हूँ मैं, तो मैं slip stitch करके इसे you can join in any of the chain spaces, doesn't matter. तो आप कोई भी chain space में इसे join कर सकते हो. So I'll just join the color here and now chain 3, 1 2 3. Now I'll make 2 double crochet stitches in the same space where I did the join, because this chain 3 will be counted as the first double crochet stitch, and I'm making 2 more here, so it will be a total of 3 double crochet stitches. तो जो chain 3 है वो मेरा पहला double crochet stitch की तरह काउंट होगा और बाकी के chain 2 मैंने बना लिए हैं. बाकी के 2 मैंने double crochet stitches बना लिए हैं. Now we have to chain 2, 1 and 2 and make 3 more double crochet stitches in the same space. इसी same space में हम 3 और double crochet stitches बनाएंगे. So in one space we are having chain 3, 2 double crochet stitches, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space, because this is our corner. So we'll have 4 of these, as we have 4 corners in a square. तो हमारे पास ऐसे 4 होंगे हर 4 corners पे, because ये हमारी corners हैं. And I'm working over the yarn tail so that I don't have to secure it later. तो मैं yarn tail के ऊपर ही work कर रही हूँ ताकि ये secure हो जाए, मुझे बाद में इसको वीव इन ना करना पड़े. नाउ चेन 1, एक चेन करेंगे, एक चेन बनाएंगे एंड वील गो इन टू द नेक्स्ट चेन स्पेस एंड मेक 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस. तो नेक्स्ट चेन स्पेस में हम 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 and 2. So we have made 2 half double crochet stitches in the next chain space. Now chain 1, फिर से एक chain बनाएंगे and we have to make 2 single crochet stitches in the next chain space. तो next chain space में 2 single crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2. Then again chain 1, फिर से chain 1 बनाएंगे and in the next chain space again we'll have to make 2 half double crochet stitches. तो 2 half double crochet stitches बनाएंगे next chain space में, then chain 1 and now we have to make our corner. तो अब हमें अपना corner बनाना है. So in the next chain space we'll make our corner. So corner is 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches. तो हम इसी तरीके से 3 double crochet stitches बनाएंगे, chain 2, 1, 2, 3 more double crochet stitches in the same space. So this is our second corner. ये हमारा दूसरा corner हो गया. Now we have to repeat this. ये इसको repeat करेंगे अब हम. So chain 1 करेंगे and now I am working on the yarn tail of the red yarn as well. मैं इसके ऊपर work करूँगी. So now we are in the next chain space. We'll work 2 half double crochet stitches.
2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे यहाँ पे, देन चेन 1, फिर से चेन 1 करेंगे. इन द नेक्स्ट चेन स्पेस वील मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. देन चेन 1 अगेन. इन द नेक्स्ट चेन स्पेस वील वर्क 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस. I don't know why this yarn is troubling so much. 2 half double crochet stitches in the next chain space and chain 1 again, and then we have reached our third corner. तो तीसरा corner है यहाँ पे. Then again in the corner we have to work 3 double crochet stitches, 2, 3, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 2 and 3. Chain 1. In the next chain space, work 2 half double crochet stitches. 1, 2, chain 1, 2 single crochet stitches in the next chain space. Chain 1, 2 half double crochet stitches in the next chain 1 space, chain 1, and the last corner, the fourth corner. So we have to make 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches here in this space, 2, 3, chain 2, 3 double crochet stitches in the same space, 2 and 3. Chain 1, 2 half double crochet stitches in the next chain space, chain 1, 2 single crochet stitches in the next chain space, chain 1 and 2 half double crochet stitches in the last chain space. The last chain space है, इसमें हमारा 2 half double crochet stitches आ जाएंगी. Oh sorry, did I say something else? It was half double crochet stitches, I apologize. 2 half double crochet stitches in the last chain space, chain 1 and slip stitch onto the third chain. So at the beginning we made 3 chains. तो starting में जो हमने 3 chains बनाई थी, we have to just go on top of the third one and make a slip stitch. Then slip stitch onto the next stitch. Next stitch से भी slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch. Next stitch से भी slip stitch करेंगे. Slip stitch in the chain 2 space. Chain 2 space में slip stitch करेंगे, and this completes our round 1 of the granny square. And now the last round, which is the second round, and this round 2 you can repeat as many times as you want, depends on how big you want your granny square to be. तो ये जो second round है इसका, जो मैं अभी करने वाली हूँ, यही पैटर्न को, जो सेकेंड राउंड है, इस सेकेंड राउंड को आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको अपना ग्रैनी स्क्वायर कितना बड़ा चाहिए. सो आई मेड ओनली, I made this size of the granny square, so I have made the round 2 only once because I wanted it to be small. So if you repeat your round 2, you will have a bigger granny square. So the flower will be the same and you will have a bigger granny square. So it depends on your choice of how big you want your granny square to be. So for that you'll have to just repeat this round. So chain 3 at the beginning, 2 double crochet stitches in the same space, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. इसी स्पेस में हम अपना कॉर्नर बना लेंगे और हर बार आपने पहला जो कॉर्नर होगा उसको इसी तरीके से बनाना है. So always the first corner will be this like this with the chain 3, and rest all the corners will be with 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches. Now we don't have to chain 1 now. We have to just go in the chain 1 spaces and make 3 double crochet stitches clusters. So we'll work 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. Next chain 1 space में 3 double crochet stitches बनाएंगे. Then again in the next chain 1 space we'll work 3 double crochet stitches. We don't have to make any chain 1 in the middle. हमें chain 1 नहीं बनानी है बीच में, सिर्फ हम corner में chain 2 बनाएंगे.
Then again in the next chain 1 space we'll work 3 double crochet stitches. फिर से next chain 1 space में 3 double crochet stitches बनाएंगे. And as you crochet your normal granny square, it's just like that. We have to just keep doing 3 double crochet stitches in the chain 1 space here. And for the next rounds you'll have to make the 3 double crochet stitches in the space between the 3 clusters here. तो इन spaces में आपने अगले अगर आप रो करेंगे तो आपको इन स्पेसेस में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने होंगे. तो आपका ग्रैनी स्क्वायर आप बड़ा बना सकते हैं. नाउ वी हैव रीच्ड आवर कॉर्नर. हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं. सो वील वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन दिस स्पेस, 2, 3, chain 2, 1 and 2 and 3 more double crochet stitches in the same space, 1, 2, 3. Now in the next chain 1 space we'll work 3 double crochet stitches, 1, 2 and 3. Then again in the next chain 1 space we'll work 3 double crochet stitches, 1, 2, 3. Then again in the next 3 double crochet stitches, 1, 2 and 3. Then now again in the next chain 1 space 3 double crochet stitches, 1, 2, 3. Now we have reached the corner, so we'll work 3 double crochet stitches, 1, 2, 3, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. तो इसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. And then this is how we have to complete the round, by doing 3 double crochet stitches in each of the chain 1 space, and in the chain 2 space we have to make the corner. And then once I reach here then I'll show you what to do next. So here I've completed the round. मैंने round complete कर दिया है. Now I'll just slip stitch onto the third chain. So at the beginning the 3 chains that we made, onto the third one I'll do a slip stitch. तो तीसरी वाली chain पे मैं slip stitch कर दूंगी. Then slip stitch onto the next stitch पे slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch पे slip stitch करेंगे, and slip stitch into the chain 2 space. Chain 2 space में भी slip stitch करेंगे. And every time when you finish the round, this is how you have to do slip stitches and reach the chain 2 space, and then work your next round from this chain 2 space. And that is how you will have a neater look, because if you stop here then you work here and you'll not have a neater look. So जब भी आप work करेंगे तो आप ये slip stitches करके chain 2 space में पहुंचेंगे, और फिर आप आगे के rounds, अगर आपको ये बड़ा बनाना है तो आप आगे के rounds यहाँ से start करेंगे, और हर राउंड को आपने ऐसे ही बिगिन करना है, नहीं तो नीट लुक नहीं आएगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज आई नीड दिस साइज. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल जस्ट चेन 1 and I'll fasten off. So after chaining 1 I'll just and now I can weave in using a tapestry needle. तो tapestry needle की मदद से मैं इसे weave in कर दूँगी. And this is how it looks. I've made many because I have a project to be made. So thought of sharing a tutorial about this granny square with you all. तो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसके लिए मैंने ये खूब सारे बनाए, और जब मैंने बनाए तो ये इतने खूबसूरत लग रहे थे मुझे, तो मुझे लगा कि एक ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये इतने खूबसूरत और इतने प्यारे हैं कि देख के मतलब दिल खुश हो जाता है. So I hope you like the tutorial. Do subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon so you'll be notified whenever I put my new video. Thank you so much for watching. Keep crocheting, be happy, stay safe. Bye bye.